Welcome to Plutus IAS. My name is Arjun Kumar and I teach philosophy optional paper. We have a topic problem of evil. Right? We have a topic problem of evil. We will discuss the problem of evil. As we know, problem of evil, this particular topics comes under the philosophy of religion. That is our paper second in philosophy optional, right? And in paper second we have a philosophy of religion, of religion philosophy of religion. And in philosophy of religion we talk about problem of evil, right? So here we will see what is the definition of problem of evil, right? Problem of evil. The problem of evil is one of the most significant. The problem of evil is one of the most significant challenges to the belief in an all-powerful, all-knowing, and all-good God, the God of classical theism. Means the problem of evil जो है वो गॉड की एग्जिस्टेंस और गॉड की जो क्वालिटीज है, जो ऑल लविंग, ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड क्वालिटीज हैं, जिसे हम कहते हैं ना ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट. तो प्रॉब्लम ऑफ इविल डायरेक्टली चैलेंज करता है ऑन दैट क्वालिटीज, राइट? Problem of evil, one of the most significant challenge, this one challenge to the belief of an all powerful, all knowing, all good God, right? That is God, like God of classical theism. जो classical theism है उस पे जो God का concept है उसको challenge करता है, right? Evil, and evil क्या है? evil हिंदी में हम अशुभ कहते हैं. अशुभ अशुभ क्यों है हर जगह? Why there is a pain everywhere, there is suffering everywhere, there is a war going on another side, there is a person suffering another side. Why? The question is why? If there is all powerful, all knowing, and all good God exist, why there is a problem of evil, right? So here we will discuss. In evil we have two kinds of evil. That is moral evil. Moral evil means suffering caused by human action. Like moral evil is caused by the human actions, that is murder and war. And the second is natural evil, suffering caused by natural event, that is earthquakes and diseases. Earthquake, diseases, lightning, flood, and many more. So here evil is human suffering, selfishness, and greed. Why? ये क्यों है? Greed, selfishness, and also human suffering. If there is all powerful God और उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड का क्रिएशन किया हुआ है, सो इविल कहां से आ गया? इतने सारे पेन, सफरिंग हमें क्यों देखने को मिलते हैं? It refers to the physical pain, mental suffering, and moral weakness. Right? The evil, the human suffering, also physical pain, mental suffering, and also moral wickedness. This pain includes, there are many types of pain, right? Many types of evil. If there is anything bad that is not per our satisfaction, per our expectation, so
not a satisfaction, like if there is anything wrong, right, in terms of poverty, कि एक तरफ क्या है बहुत सारे रिच पीपल है, एक तरफ बहुत सारे पुअर पीपल हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बहुत सारे रिच पीपल हैं, then why there is a differences between rich and poor people? If there is all powerful God, तो सबको इक्वल बनाना चाहिए, राइट, इक्वल बनाना चाहिए. It doesn't matter if you are a rich, if you are a poor, both have a money and both are equal. So we can't see in real life, right? That's why this type of question arise. Poverty, oppression, and persecution, war, and all the injustice, indigeneity, and inequity that have occurred throughout history caused by human action, right? Human action. Although it is caused by human action, if there is a all-powerful God, why doesn't he come and prevent and avoid that kind of situations? So there is a question and also challenge the existence of God. And what are the natural causes? The earthquakes, storm, fire, lightning, flood, drought, right? If there is all loving God, जो सबके बारे में सब अच्छा अच्छा सोचता है, so why there is a one side flood and one side greenery? कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा होता है. Why the most people are suffering from hunger and the many people are living lavish life? Why there is a difference? That's why here the problem of evil arises. Challenges to theism. Challenge to theism means ये क्या करता है? Problem of evil किसको चैलेंज करता है? चैलेंज ऑफ थीजम. थीजम मीन्स जो गॉड को मानने वाले हैं, जो गॉड को एक्सेप्ट करते हैं, ऑल लविंग, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट. सो इट इज चैलेंज फॉर देम कि आप तो ऐसा बोल रहे हो कि ठीक है गॉड ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बट इन रियलिटी व्हाट वी सी, देयर इज अ डिफरेंट पिक्चर. सो चैलेंज टू थीजम, God must wish to be abolish this, right? God must wish be abolish this. If God is omnipotent, all powerful, omniscient, all knowing, and omnibenevolent, means all good, then why does evil exist? It is a challenge. It is challenge for theism, right? अगर theism, if theism says कि there is a God exists and God is all powerful, all knowing, and all good, so God must wish to be abolished. God को आना चाहिए और सारी चीजों को abolish कर देना चाहिए. The differences, the separations, the pain, the sufferings, war, drought, flood, everything, सबको खत्म कर देना चाहिए. तो ये चैलेंज है थीजम के लिए. बट इविल एग्जिस्ट. हम क्या देख रहे हैं कि इफ गॉड एग्जिस्ट और वो उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो उन्हें आके खत्म कर देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए एवरीथिंग. बट व्हाट वी सी, इविल इज देयर, इविल एग्जिस्ट, राइट? इविल एग्जिस्ट. देयरफॉर गॉड cannot be both omnipotent, all powerful, and perfect loving, like perfect loving. अगर हमें अभी भी दिख रहा है कि there is evil everywhere, it means God is a not omnipotent,
ऑल पावरफुल, वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो सारी चीजों को खत्म कर सकता है। एंड नॉट परफेक्टली लविंग, वो अपने जो क्रिएशन है, वेदर इट इज ह्यूमन और एनी स्पीसीज, वो उनसे लव नहीं करता है उतना, राइट। तो दिस इज अ चैलेंज फॉर थीजम, जो गॉड को मानने वाले हैं, एंड स्ट्रांगली सपोर्ट दैट देयर इज अ गॉड हु इज ऑल लविंग and present everywhere, right? And theist philosopher says that God is omnipresent, sabhi jagah hai, and he is watching, God is watching you, right? If God is watching, तो उसको आना चाहिए और सारी चीजों का क्या करना चाहिए, एरेडिकेट कर देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए सारी चीजों को, राइट। बट इन द लाइफ, in real life, what we see, evil is everywhere. Nowadays there is a war going on between India and Pakistan. So अगर गॉड होते तो वो रोक देते कि ओके, वो कि आप वॉर क्यों कर रहे हो, राइट। सो आगे देखेंगे, दिस इज द चैलेंज फॉर थीजम। अब इसको लॉजिकली कुछ लोग रेस करते हैं, लॉजिकली, कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। सो उसका चैलेंज कौन करता है, लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल, एंड एपिक्यूरस एंड डेविड ह्यूम, दे गिव अ लॉजिकल आर्गुमेंट to deny the existence of God, formulated classically by Epicurus, means ये जो है logical problem of evil, it is formulated by originally Epicurus and later by David Hume, और बाद में डेविड ह्यूम ने उसको और ज्यादा फॉर्मुलेट किया, स्ट्रॉन्ग बनाया। This version claims a logical contradiction in believing both God and existence of evil. Obviously, as we have discussed right now, that if there is a God and there is a evil, how can they live both together, right? How can, एक साथ तो नहीं हो सकते, right? And God के attributes हम जानते हैं, all loving, all omnipresent, omnipotent, and evils क्या है, all suffering and pain. So there is a contradiction. कहते हैं ना, पानी और आग एक साथ कैसे रह सकते हैं, या तो पानी होगा या तो आग ही आग होगी। इफ देयर इज अ फायर तो फायर ही होगा, इफ देयर इज अ वाटर ही होगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, राइट। तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर एंड फायर एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इविल एंड गॉड एक साथ कैसे रख सकते हैं, राइट। सो हियर द एपिक्यूरियन पैराडॉक्स, तो एपिक्यूरस ने पैराडॉक्स दिया, लाइक ही सेज, इज गॉड विलिंग टू प्रिवेंट इविल, राइट। इज गॉड विलिंग, गॉड इच्छा कर रहा है टू प्रिवेंट इविल, बट नॉट अवेल, समर्थ नहीं है, चाह रहा है कि मैं आके खत्म कर दूं, बट नॉट अवेल, समर्थ नहीं है, देन ही इज नॉट ओमनीपोटेंट, वो ऑल पावरफुल नहीं है, राइट। And is he able but not willing, then he is a malevolent, right? If he is both able and willing, then whence cometh evil, आया कहां से, from where, कहां से आया, from where? If he is able but not willing, then he is a malevolent, वो क्रूर है, बहुत दुष्ट है, वो चाह रहा है, देख रहा है दूर से कि हाँ इविल्स बहुत है, बट आ नहीं रहा है, इट मीन्स वो बहुत क्रूर है, बहुत दुष्ट टाइप का है, राइट। तो इज ही अबेल बट नॉट विलिंग, देन ही इज अ मेलेवोलेंट। एंड थर्ड पैराडॉक्स देते हैं,
Is he both able and willing? Then whence cometh evil? अगर वो चाह रहे हैं, both able and willing, चाह रहे हैं और समर्थ भी हैं करने में, मतलब विलिंग भी, विल भी कर रहे हैं कि ठीक है मैं आऊंगा खत्म कर दूंगा, और समर्थ भी, ऑल पावरफुल हैं, देन फ्रॉम वेयर? मींस इविल, जो इविल है वो कहां से आया फिर, राइट? अगर समर्थ भी थे और चाह भी रहे थे तो खत्म कर देना चाहिए, तो आया कहां से? एंड वी आर सीइंग एवरीवेयर, राइट? द नेक्स्ट is he neither able nor willing? Is he neither able nor willing? It means then why call him God? यदि वो समर्थ ही नहीं है और विल भी नहीं कर रहे हैं तो why call him God? हम उन्हें गॉड क्यों बोले? अगर वो विल भी कर रहे हैं, ना ही विल कर रहे हैं और ना ही समर्थ हैं, तो हम उसको गॉड कहने की जरूरत नहीं है, राइट? नीदर विलिंग नॉट अबेल, ना ही विल कर रहे हैं और ना ही समर्थ हैं, दूर से बस देख रहे हैं, तो वो गॉड की डिफिनीशन ही नहीं कंप्लीट हो रही है, तो व्हाई वी से गॉड, राइट? व्हाई? देन व्हाई वी कॉल हिम गॉड? So it was paradox presented by Epicurus, right? Here the problem of evil is typically framed as a logical argument. If we frame problem of evil in a logical argument, the logical argument looks like this. First, there is a premise. If God exists, then he is omnipotent, omniscient, and omnibenevolent. The second premise is evil and suffering exist in the world. दोनों exist कर रहे हैं. Evil and suffering exist in the world. Conclusion: the existence of evil and suffering is incompatible with existence of an all-powerful, all-knowing, and all God. वो compatible नहीं है एक साथ दोनों को existence में, right? So it is logical framework. Now further हम move करेंगे. The response, obviously जब प्रॉब्लम एराइज की गई, चैलेंज किया गया थीज्म को, और जो गॉड के मानने वाले उनको चैलेंज किया गया कि लुक, योर गॉड इज वॉचिंग, ही इज डूइंग नथिंग, सो हाउ कैन वी से ही इज गॉड? हम गॉड उसको क्यों बोले, राइट? सो उनके रिस्पॉन्स में कुछ थ्योरीज रिस्पॉन्स करते हैं, राइट? कुछ थ्योरीज या डिफेंस में आते हैं, राइट? कि नहीं आप तो गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम बताते हैं कि कैसा है, हम बताते हैं गॉड इज ऑल लविंग, ऑल पावरफुल, और सारी चीजें जो इविल की चीजें हो रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या है. So they come forward to defend the existence of God and their good attributes. So the first is free will defense. St. Augustine, Alvin Platinga, philosophical and theological. They have given argument in philosophical and theological, right? अगर हम केवल theological देंगे तो theological वो mythological बन जाएगा, theological. If there is a no philosophy वो mythology बन जाएगा, right? So philosophical and as well theological, given by St. Augustine and Alvin Platinga. Augustine holds that evil always consists of the malfunctioning of something that is in itself good. अब suppose this is a mobile, और ये मोबाइल अच्छा वर्क कर रहा है, this is working good, और ये किसी वजह से काम करना बंद कर देता है, मीन्स अपने आप में तो ये पूरा गुड है ना, अपने आप में पूरा गुड है, किसी माल फंक्शन की वजह से इसने ऐसा करना बंद कर दिया, तो गॉड ने जो क्रिएट किया था वो तो गुड ही क्रिएट किया था. सपोज इसका जो क्रिएटर था वो तो गुड ही था, तो गॉड क्रिएटेड अस इन ए गुड मैनर,
because of the malfunctioning there is a evil, right? So understand, hold that evil always consists of malfunctioning of something that is in itself good, right? He says evil is the result of human free will. Free will. God has created us and he has given free will to everyone to act accordingly by their self in a freedom, right? गॉड ने सबको क्रिएट किया हुआ है, सबको फ्रीडम दे दी है, सबके पास फ्री विल है, एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? अपने अपने डिसीजन खुद से लो, अपने अपने एक्शन खुद से करो, आपके पास फ्रीडम है, राइट? तो इज इट नॉट ए फीचर ऑफ ए गुड गॉड कि उन्होंने आपको दे दिया? अगर वो आपको सपोज बांध के रखते, बाइंड करके रखते ना कि ठीक है आपको मैंने बनाया है तो यू नीड टू डू दिस एंड दिस ओनली, तो आपको स्लेव वाला फील नहीं आता। तो गॉड क्रिएटेड अस एंड गिवन अस फ्रीडम टू एक्ट बाय यूजिंग देयर फ्री विल एंड मेक डिसीजन बाय यूजिंग फ्री विल ऑल्सो। सो इविल इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फ्री विल। अब ह्यूमन फ्री विल है, आपके पास फ्री विल है, आप अच्छा करो बुरा करो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? आप एक पढ़ लिख के एक अच्छे पर्सन बनो या फिर आप एक जाके कोई चोर डकैत कुछ बनो, राइट? तो इट इज अप टू यू। गॉड ने आपको बना दिया है, सबको सेम बनाया हुआ है। God created us in a same manner, but it is you who decides how to make decision, right? So here this one, evil is the result of human free will। आपके पास फ्री विल दी गई है और आपने केवल क्या किया है, गलत काम किए गए हैं, तो उसी का फल आपको मिल रहा है। तो the suffering you are facing is the result of your free will। And the second point is God gave us freedom, and freedom includes the possibility of choosing evil, right? If you have a freedom means there is a possibility you maybe choose evil paths, right? So this is the second argument. And the third is God is not the author of evil, humans are, right? सो गॉड जो है वो ऑथर ऑफ इविल्स, इविल्स उन्होंने खुद से नहीं क्रिएट किया हुआ है, ह्यूमन क्रिएटेड है। बिकॉज गॉड हैज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, सबको उन्होंने फ्री विल दिया हुआ है, सबको उन्होंने फ्रीडम दी हुई है। इफ देयर इज ए इविल देन इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शन। नाउ देयर इज another theory, that is soul making theodicy given by Saint Irenaeus and John Hick, right? And what they say, evil and suffering exist as opportunities for spiritual growth, right? Evil and suffering exist as opportunities for spiritual growth। if there were no evil, आप जानोगे कैसे कि गुड क्या होता है, राइट? अगर कहीं पे बैड है इट मींस देयर इज अ गुड ना, तभी आप गुड की ओर जाओगे। तो क्या करता है, आपका डेवलपमेंट करता है, आपको परफेक्टनेस की ओर लेके जाता है, राइट? ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, कि आपको मोरल एक्शन करने हैं, गुड एक्शन करने हैं, डिसीजन अच्छा लेना है, राइट? तो इविल एंड सफरिंग एग्जिस्ट एज अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर सबके पास केवल सबके पास सब बिलियनियर्स हैं, ठीक है, सब रिच पीपल्स हैं, if all people are rich, so
उसमें क्या होगा, उसमें बैड की वैल्यू नहीं रहेगी। अगर पुअर नहीं है तो उसको पता कैसे चलेगा कि रिचनेस होती क्या है, और वो फिर अपना वर्क कैसे करेगा, डेवलपमेंट कैसे करेगा, फिर वहीं पे सब स्टक नहीं हो जाएंगे, राइट। डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा। सपोज सभी के पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए, सभी ने अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ली, सभी ने अपनी अपनी सारी चीजें, जरूरत की चीजें ले ली, तो फिर मार्केट रन कैसे करेगा, कैसे शॉप्स होंगी। सबके पास बिलियनियर्स हैं, सब बोलेंगे ठीक है हमने तो अपने घर पे ही किराने की दुकान खोल ली, हमने घर में ही अपनी आटी चक्की खोल ली, सब खोल लिया है, तो फिर मार्केट कैसे रन करेगा, राइट। तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल की ग्रोथ हो रही, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात की जा रही है। इफ देयर विल बी नो इविल, so how can you grow spiritually? The next point is, a world without suffering would not allow moral development, that is courage and compassion, right. Moral development and moral attitudes and moral attributes also, right. A world without suffering, अगर suffering ही नहीं है, अभी पेन ही नहीं है, would not allow moral development, वो moral development को allow ही नहीं करेगा, right. And the best possible one, the next is given by argument given by in the favor of the existence of good God, given by the best possible word, Leibniz. And he says God created the best of all possible words, even if includes some evils, right. So according to the Leibniz, God created the best of the all possible words, जितने पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करके गॉड ने क्रिएट किया है वर्ड को। इवन इफ देयर इज evil, eliminating evil might also eliminate greater good, right. Eliminating evil, क्या आप अशुभ को पूरी तरीके से खत्म कर दो, might also eliminate greater good, right. तो फिर उसका एग्जिस्टेंस ही कैसे होगा, right. Eliminating evil might also eliminate greater good, फिर greater good का कोई भी इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा, right. अगर evil हट गया, अगर ग्रेट evil हट गया, अगर अशुभ हट जाता है तो शुभ की क्या वैल्यू रहेगी। सभी लोग शुभ जानना है, सभी लोग शुभ हैं, ओके, देयर इज गुड एवरीवेयर, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी, राइट। तो दैट्स व्हाई ही सेज एलिमिनेटिंग इविल माइट आल्सो एलिमिनेट ग्रेटर वर्ड, उसको भी एलिमिनेट कर देगा, राइट। नाउ वी विल सी द पनिशमेंट ऑफ कर्मा बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन ईस्टर्न रिलीजन, मींस अपने इंडिया में कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। इंडिया पे हमने क्या बोला है कि what we do, what we are facing, we are suffering is because of our karma that we have done, right. कभी कहते हैं ना कि हमें पूर्व जन्मों का फल मिल रहा है, जो अभी हम फेस कर रहे हैं, what we are facing sufferings is the fruits of our past actions, right. जो हमने पास्ट में एक्शन किए हुए हैं उसी का हमें फल मिल रहा है, right. So punishment of karma based on explanation ईस्टर्न रिलीजन, जिसमें बेसिकली क्या है, इंडियन रिलीजन, इंडियन रिलीजन, राइट। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एक्सप्लेन सफरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कर्मा फ्रॉम पास्ट एक्शन, राइट। पास्ट एक्शन जो हमने पास्ट में किया हुआ है उसी का हमें फल मिल रहा है। What we are facing, suffering, pains, bad things is the result of our past karma, right. And the next point is suffering is a part of cosmic moral order rather than fault of deity, right. Suffering is a part of cosmic order, cosmic order का वो part है, it is not caused by God or deity, right. So basically
ये है ना, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म एक्सपीरियंस सफरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कर्म फ्रॉम पास्ट एक्शन। कहते हैं ना, कर्म का, आप जो भी कर्म करते हो उसका फल, उसका जो फल है नष्ट नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? कृत प्रणास, कृत प्रणास। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल नष्ट नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसको भोग नहीं लेते हैं, उस कर्म का फल हमें नहीं मिल जाता है, तब तक उस कर्म का फल नष्ट नहीं होता है। राइट, कृत प्रणास, कृत प्रणास, दिस वन। राइट, तो फल जो हम कर्म किए हैं उसका फल नष्ट नहीं होता है जब तक वो फल हमें मिल नहीं जाता है। So they defense in Indian terms also, in Indian philosophy, they also present a defense to the existence of God. He says, okay, that if there is a evil and we are facing suffering and pain, is not, it is caused by the God. God has created, or the ईश्वर, जो इंडियन फिलोसफी में बोलते हैं कि ब्रह्मन, ब्रह्मन जो गॉड है, उन्होंने सबको इक्वली क्रिएट किया हुआ है, सबको फ्री विल दी हुई है, सबके पास फ्रीडम है अपने एक्शन करने का, सब लोग चूज कर सकते हैं। फ्री विल का मतलब है कि यू हैव ऑप्शन, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव ऑप्शंस। फ्री विल का मतलब है, फ्री विल, यू हैव ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, 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 राइट, ऑप्शंस A1, A2, A3, A4, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। आपके पास गुड भी चूज करने का है, बैड भी चूज करने का है, तो यू कैन चूज एनीथिंग, राइट। सो या, एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम ऑफ इविल, राइट, प्रॉब्लम ऑफ इविल वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सीन द प्रॉब्लम ऑफ इविल है क्या, प्रॉब्लम ऑफ इविल है क्या, एराइज कैसे होती है, एंड लॉजिकल उसके ग्राउंड क्या है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द गॉड, एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन द डिफेंस ऑफ existence of all loving, omnipotent, omniscient God. Right, we have seen logical problem of evil, and also we have given 3 possible defenses in the support of God. Okay, so yeah, we have discussed about the problem of evil. So thank you.